There are very less humans, and among them only very less actually desire for liberation, and among them also there are very few who attain liberation. And then among those liberated souls, only very few people understand the Krishna consciousness. It's been confirmed. Among thousands of those liberated, perfected souls, only few gets to know about Narayan's bhakti. That is very rare. So, O Shukdev Goswami, tell me that how Vritrasur became such a great devotee. Now, Shukdev Goswami starts telling the history of Vritrasur. In Shursen, there was one king, Shursen. At that time, he had 10 million wives, but he had no son, no child. So he was very upset. One day, King Angira, he entered in the palace of the king. Chitraketu Maharaj paid obeisances and feed him prasadam. When Angira Rishi, he sat on the throne, and Chitraketu Maharaj came there, and Angira Rishi asked that, is everything fine in your kingdom? I can see you are upset. Is there any desire in your heart which is unfulfilled? So Chitraketu Maharaj said that, O Mahatma, you are all-knower, you knows everything. But still, I will explain you the cause of my distress. The way a thirsty and hungry person can only be satisfied by water and food, flower garland cannot satisfy him. In the same way, although I have such a big kingdom, I don't have a son. Please give me one son. Just give me some solution through which I can attain a son. Angira Rishi knew that there is no son in the destiny of Chitraketu Maharaj, but still he insisted. So Angira Rishi gave some prasad. Now Chitraketu Maharaj gave that prasad to the eldest wife. Now Angira Rishi told Chitraketu Maharaj that you will attain the son, but that son will be the cause of your happiness and distress both. Chitraketu thought that this son will become the cause of my distress also. He just ignored that part. He just thought that when my son will become the king later, he might become proudy, or my son might not be very loyal and very obeying. But it's okay. I just want a son. So, taking the prasad, the wife became pregnant. Now, after that, she gave the birth to a son. Now, hearing this, Chitraketu Maharaj had no limit of happiness. He donated so much gold, horses, elephants, 600 million cows he donated. So, in this way, because this son was attained with so much difficulty, that's why he got so much attached. Now, the king, he got also attached to the wife from whom this son begot. So, he started focusing more on that particular wife who is the mother of the boy. Now, all the other wives, they got jealous and they poisoned this little boy and killed him. Now, seeing this, the mother started crying and she fainted. And when Chitraketu Maharaj, he heard this, he also fell on the ground and got fainted when he heard this news. Now, the mother started cursing the destiny that, oh, Creator, you don't know how to create. You are so merciless. How can you make this law that the father is alive and the little boy is dying? What is this rule? What is this law? If you say that
If a person dies by one's own karma, then why you actually created attachments of affection? When Angira Rishi got to know that Chitraketu Maharaj actually got drowned in the ocean of distress, then he came there. Then Angira Rishi came and started telling the king that, "Oh king, why are you crying? Do you have any relationship with him? If you would say that, oh, this is my son and I am his father, so was there any relationship with you, like between you in the last birth, and it will be staying in the next birth also? The way little dust particles, they just meet together by the strength of water, and they get separated also. In the same way, the jiva also, he passes from one body to another. From the seed, sometimes plant comes out, sometimes the seed gets destroyed. In the same way, the son also takes birth from the father, or sometimes gets died in the womb itself. But there is no difference in the world because of that. So, O king, the way we are here all together, so were we together in the last birth, or we will be together in the next birth also? So that means that we all are not together right now also. So all these things that we are saying, husband, wife, sons, children, they are all temporary. At one time it is observable, and the other time it is like not observable, like they die. So just stop thinking about this and start thinking that from where you have come and where you will go after death. Now Narad Rishi, he, from his potency, he actually gave life to that boy and said that, oh, just wake up. And when the boy woke up, he said that, oh, now you can enjoy again, you can stay with your parents. Now that boy, that same boy who died, he said that now by the actions and reactions, I am going in different bodies, sometimes the body of animals, or in the demigods, or in the humans. So my parents, how can I consider them as my parents? So Jiva also attains different parents in different species. For example, a person has an animal. That pet, a person has a pet and he has attachment to the pet. But when the pet is given to someone or sold to someone, then the attachment goes away. So the soul does not have anyone dear or anyone as an enemy. So now hearing these words of the boy, Chitraketu Maharaj and everyone, they became very shocked, surprised, and they stopped mourning. Now, by hearing the instructions of Angira Rishi, Chitraketu Maharaj became intelligent and he paid obeisances. Now Narad Rishi told Chitraketu Maharaj that I give you one mantra. If you chant that for 7 nights, then you will get darshan of Bhagwan Sankarshan. So Chitraketu Maharaj, he chanted 7 nights, just drank water and very carefully chanted those mantras. And he had darshan of Bhagwan Sankarshan. Because of the darshan of Bhagwan Sankarshan, Chitraketu Maharaj, all sins got destroyed, and he did stuti, he prayed, he worshipped the Lord very nicely. Now seeing this, Lord Shankarshan became very happy and he asked Chitraketu Maharaj
that because of my darshan you have attained all perfection. Then Chitraketu Maharaj, for lakhs of years, he like so he used to do Harinam Sankirtan. Now one day when Chitraketu Maharaj he was roaming here and there, so he found that Lord Mahadev is in the assembly of many saints, and the wife Parvati is sitting on the lap of Mahadev ji and embracing him. Now seeing this, Chitraketu Maharaj laughed and said that, oh, it is such a great surprise that among all jivas, among all saints, in that assembly, Shivji is sitting in that pose. Even normal people, they don't sit like this. And Shivji is sitting like that. Now seeing this, Shivji just smiled and did not say anything. But Parvati ji got very angry. Now Durga Devi cursed this person, cursed this Chitraketu, that I give you curse that you become a demon. And then Chitraketu Maharaj, with bowing head, he said, O Devi, the curse that you have given me, I accept that with folded hand. A person actually undergoes suffering and happiness as per the karma. There is no fault of mine or yours. Everything is temporary. Oh Devi, the curse that you have given me, I am not praying to get out of it. So saying this, Chitraketu Maharaj, he sat on his airplane and he left. Chitraketu Maharaj was completely fearless even after getting cursed. Now seeing this, Shivji and Parvati became very surprised. Shivji told to Parvati that, see how glorious Chitraketu Maharaj is. Devotees of the Lord, they are never fearful. They consider happiness, distress, heaven and hell as same. Chitraketu Maharaj could have actually given you curse back, but he did not do it. How humble he is. Now, because of the curse, Chitraketu Maharaj took birth in demon society, in a demon community, and he got this name Vritrasur. Now, Shukdev Goswami is saying to Parikshit Maharaj that, oh king, you asked that how Vritrasur became this great devotee, so I have told you the whole katha regarding this. And at the end he is saying that those who hear this pastime of Chitraketu Maharaj, he becomes free from material entanglements and attain high destination. We get some or other teachings from different Harikatha. Now from this Katha, what teaching we get? We get the teaching that if we desire for any material rewards, then that actually becomes the cause of our distress. For example, as we just heard, Chitraketu Maharaj, in his destiny there was no son, but he forcefully wanted that material son. And that same son became the cause of his distress. He could have actually asked for bhakti from the Lord, but he asked this. So any material thing that we ask for is actually the cause of distress. Now when Vritrasur was fighting with Indra, he actually prayed to the Lord in a very interesting way.
Hearing those prayers, even Indra got surprised that what kind of demon he is who has such high class of mood. There are 4 important shlokas. हे हरि, आपके चरण जो आपके चरण कमलों के आश्रय में रहते हैं, He says, "Oh Hari, those who reside at your lotus feet, मेरा मन सदा आपके गुणों का स्मरण करते रहे, मेरा वाणी सदा आपके गुणों के गान करते रहे। may my mind always remember you, may my tongue always do your kirtan. May I become your servant." Na, and the next shloka is this. Oh Prabhu, I don't want Dhruvalok, I don't want Brahmalok, neither I want the kingdom of earth, neither I want yoga and siddhis, perfections, nor I want mukti, liberation. Ajat paksha eva maat, हे कमलोचन, ऐसे पक्षी के बच्चे जिनके अभी पंख भी नहीं निकले हैं, जैसे इस रस्सी से बंधे हुए छोटे बछड़े भूख लगने पर अपनी I want to call out you as a little calf waits for the mother cow, the way the wife becomes restless to have darshan of the husband who is far away. In the same way, I am also getting restless for your darshan. Mamuttama shloka, this is the 4th shloka. O Prabhu, O Nath, O Master, I am suffering in different species because of my karmic reaction. May I attain the association of your devotees and I get friendship with them. Because of your Maya, whatever attachment that I have from my wife, household, family and everything, may that get destroyed. सुशील प्रभु, उसको हटाओ। सुशील प्रभु, सुशील प्रभु हटाओ। हो श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा राम है।
गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। हो जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला मुरली मनोहरी नंदलाला मुरली गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला गोविंदा जय गोपाला मुरली मनोहरी नंदलाला मुरली मनोहरी नंदलाला मुरली मनोहरी नंदलाला मुरली
हाँ बोलिए राधा माधव जी को देखेंगे यहाँ से बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय खुशियाँ एक बार जोर से श्री राधा रानी
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, श्री कृष्ण चैतन्य Krishna Hare Krishna, प्रभु नित्यानंद Krishna Krishna, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांती महाराज जी के चरणों में भी मैं अपना यथा योग्य प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त उपस्थित भक्तगण सभी के चरणों में ही मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। श्री श्री राधा माधव गौड़िया मठ का श्री श्री राधा माधव गौड़िया मठ हम लोगों ने 16 नवंबर on 16th of November अधिवास तिथि का पालन किया। we followed 17 तारीख को Adhivas Tithi. On श्री चैतन्य 17th महाप्रभु के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। we did साथ ही Pran साथ Pratishtha श्री श्री राधा ceremony माधव of जी Sri Chaitanya Mahaprabhu, and with that Sri Sri Radha Madhav ji also they अपना stayed at this place. सेवा Shifting here, उसको स्वीकार करना प्रारंभ they have किया। started अपना accepting the आधिपत्य service. उन्होंने ग्रहण किया। They have taken the ये जो lordship here. मठ है Now this mutt, इसमें जो in this, आराध्य देव the worshipable, that means the one इस स्थान को to whom this place belongs, जिन्होंने कृपा पूर्वक ग्रहण किया who has mercifully accepted this place, that is Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Sri Radha Madhav ji. अपना They बना करके have made this place as their own. जो है Accepting this place, कृतार्थ किया। they have actually
made us fortunate. Our Maharaj Ji, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj Ji, एक बार once हिमाचल में in Himachal, हमीरपुर नामक स्थान पर a place named Hamirpur, विग्रह और मठ की प्रतिष्ठा के उद्देश्य से गए थे। he went there for वहाँ पर establishing deities. एक माता जी Once उनको there, one एक Mataji, माता जी मिलने के लिए आई, she came to meet. जो जिन्होंने मठ वो बनाया था, वो वाले महाराज जी जो है एक माता जी को लेकर के आए। The one who constructed the सबसे mat, बड़े वैष्णव वहाँ that Prabhu, he brought this Mataji to our Srila Maharaj Ji. आकर के उन्होंने मठ के So- जो जिनका मठ उन्होंने आकर के बतलाया, महाराज जी ये माता जी जो That है, Prabhu, he came and introduced this Mataji, that Maharaji, this Mataji actually donated the whole land for this temple. ये वाली भूमि जो है She only gave this land for construction of temple. कहा ये माता जी दाता है, He said that this Mataji is जगह दिया है। the giver. तो महाराज जी ने उस Then समय Maharaj Ji at that time, he told one thing, that, "Oh Mataji, see, पृथ्वी का जो है भाग्य बदल गया। Prithvi's ये पृथ्वी fortune ऐसे तो सारी has की सारी changed. पृथ्वी सारे ब्रह्मांड ही भगवान के हैं, Although everything कुछ ही भगवान का है। belongs to the Lord, everything is of Bhagavan. जो Now, from बहुत that, सारे स्थान वो there are so many अलग-अलग different कार्यों से उपयोग में places लाए which जाते हैं। get used for different purposes. But इस पृथ्वी के इस स्थान को this भगवान place, ने this अपनी piece सेवा of के लिए land ग्रहण करके क्या कर दिया, पृथ्वी has के been भाग्य accepted को by the बदल Lord, दिया। and in this way the Lord has वो actually इतने समय से खाली made पड़ी हुई थी। earth very fortunate. This earth कौन-कौन was व्यक्ति पता नहीं क्या-क्या, किस-किस not उद्देश्य से used इसका in उपयोग good करता way. था। Instead, this piece of land of earth was getting used for different purposes. But now its fortune has changed. भगवान आकर के Why? Because विराजमान here हो गए। the Lord Himself came and got established. दूसरी बात वो माता जी को And बताई, second thing that he साथ में told जो to महाराज Mataji, जी थे, उनको another भी अच्छे से Maharaj बता जी दी बातें को। who was present there, he also was told ये तो हम one लोग important point by Maharaj बैठे Ji. हैं हमीरपुर He में। said that, see, we are sitting right now in Hamirpur in Himachal. तो एक समय But at some कलकत्ता point, में मठ का स्थापना हुआ। we established a temple in भक्ति Kolkata. सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के समय में Like at the time of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, a mutt got established. बहुत बड़ा And there, मंदिर, फिर a big नाट्य temple, मंदिर, जहाँ हम बैठे हैं, इसको कहते हैं नाट्य and the मंदिर। Natya Mandir means जहाँ पर this भक्त temple लोग hall बैठ के where the भगवान का devotees कथा sit कीर्तन सुनते हैं। and hear Bhagwan's Harikatha Kirtan. मंदिर का जगह, नाट्य मंदिर का जगह, साधु निवास The का place जगह, of सारा temple, कुछ temple hall, एक भक्त जिनका नाम श्री जगदीश बाबू, so there was this उन्होंने वो devotee जगह प्रदान की। whose name was Jagdish Babu. He actually donated that piece of land for temple hall, temple, and the whole temple he only constructed. He also constructed the rooms for the devotees. When the pratishtha was happening of the temple, at that time Srila Prabhupada desired that for 1 month I will do festival. 1 month festival will go on. And प्रत्येक दिन every day, कथा कीर्तन विशेष रूप से होगा। special way, in a special way, Katha Kirtan will happen, and devotees from में से ही Kolkata, from different parts of Kolkata, all the special guests गया। will be हर invited. रोज कोई ना कोई एक नया Every day, व्यक्ति आता a new guest would come. था। एक दिन One day, जज वहाँ पर आए a judge came there, और उन्होंने and he, कथा में अपनी कथा बोलते बोलते वो जज while ने speaking कह दिया Katha, कि chief guest that थे। judge told, he was a chief guest, he told कि ये जो that जगबंधु दत्त this Jagbandhu Datta, जिन्होंने मंदिर का जगह
who दिया, मंदिर gave बनवा this दिया, piece of land साधु for the निवास temple. बनवा दिया, He constructed the temple, also the पूरा rooms for महीना sadhus. उत्सव भी यही कर And करके whole दे रहे month हैं। he is only performing तो ये all the बहुत festivals बड़े and दाता sponsoring हैं। everything. So he is a great giver. बहुत बड़े दाता हैं। He is a इतनी great बड़ी giver. जगह, He gave इतना बड़ा such a मंदिर big piece of सारा land, अच्छी तरह से इन्होंने करके दिया। and ये he बहुत बड़े दाता also organized so many things. So he is a great giver. At that हैं। time, जगत बंधु प्रभु Jagat Bandhu सारा Prabhu, करके दिया था सेवा, उन्होंने ऐसे who वो actually निरक्षर थे। did everything, निरक्षर मतलब that अनपढ़। Jagat Bandhu Prabhu, he ये अक्षर was लिखना पढ़ना illiterate. नहीं जानते थे। He did not know how to read and write. उन्होंने हाथ उठा करके He raised the प्रभुपाद जी को hand कहा, and told Prabhupada ji, Prabhupada ji, मैंने तो आज तक जीवन में कभी कोई स्पीच नहीं दी है। I have never given अपने any हाथ में speech कभी माइक in my पकड़ा life. नहीं है। I have never किंतु held my मेरी any kind इच्छा of है, mic in my थोड़ी hand. देर के लिए But today, मेरे को माइक दे दिया जाए। I want that for some time mic should be given to me. So Prabhupada ji said, very nice. बोलो, जो आपको बोलने You का speak इच्छा, whatever you want. माइक दे दिया। He gave mic. और फिर And then उन्होंने कहा, he said, जगत बंधु दत्त Jagat ने Bandhu Dutt, he said, कि ऐसे तो although ये कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज हैं, he is the High Court Judge of Kolkata and very literate person, very सबको educated, न्याय प्रदान करते हैं, and he gives justice to all. न्याय प्रदान करते हैं। किंतु इन्होंने मेरे विषय में जो बात बोल दी है, But the point that he has told about me, that is not justice, that is injustice. जो बात बोली है वो ठीक बोली नहीं है, गलत बात बोल दी है। It's not correct actually. क्या गलत What he बोला said, है इन्होंने? what was wrong in his इन्होंने words? कहा कि He said मैं that दाता हूँ, I am the giver. मैं बहुत बड़ा दाता हूँ। I am a great इन्होंने जो giver. बात बोली है, So ये what he बात said बिल्कुल गलत is है। actually false. दाता एक राम, Data ek Ram, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दाता जो दुनिया। है वो एकमात्र कौन है? The giver is only है, Ram. भगवान है। Ram, Bhagwan is the only giver, and everyone else तो इसलिए are मैं दाता हूँ, just ये बात beggar. इनकी गलत हो गई। So I am the giver, that is completely wrong. वाली बात बोल दी। He has actually done a very wrong thing. एक बात मैं और बोल It's देता not हूँ complete justice. कि Also, I would add one more thing that जगत के लोग हैं जिनकी सारी चीज है उनको सारी चीज नहीं देते, बीच में चोरी करते हैं। people और of this कहते हैं world, कि मैं they मालिक हूँ बहुत सारी steal many चीजों things का। in between and say that I am the Lord of many एक things. गुण है, But I have इन्होंने जो दाता one है, quality भगवान, that उनकी किसी चीज में से कोई चोरी नहीं। I have never stolen मैं चोर anything नहीं हूँ। that मैंने belong क्या to the किया? Lord. What I have उनकी done, जो सारी वस्तु all the मेरे पास things में थी, that belong to मैंने Him, उनकी सारी की सारी which चीजों was को kept to me, उनकी सेवा I में just used लगा all of दिया that है। in His service. तो इसलिए So that's why इन्होंने जो कहा मैं दाता हूँ वो तो गलत the thing हुआ। that He said that I am the किंतु जो giver, सत्य that बात is है not वो क्या completely है right. But कि the मैं real thing चोर is नहीं हूँ, that I मैं am not वास्तविक अच्छा सेवक हूँ। thief और and मेरा I am यही a real जो good servant, भावना है, and this mood that I have, वो सब समय के लिए बना रहे। may that यही mood मेरी stays all the प्रार्थना। time, and this is my prayer. इस प्रकार से उन्होंने In this जो way, है अपनी बात को रखा। He तो spoke इसलिए His महाराज words. जी जब हमीरपुर में ये वाली कथा So when सुनाते Maharaj थे, ji was speaking this katha in माता जी को Hamirpur, उन्होंने बोल दिया, so he told that Mata ji, "Oh अपने Mata मन में ji, कभी ऐसा विचार नहीं don't रखना ever कि have मैं this दाता mood हूँ। in the heart that I आप am the दाता नहीं giver. हो। You are not the आपने giver. उल्टा जो ये भूमि दे दी मंदिर के लिए, Instead, the land that you have donated for the temple, आपने you have चोरी actually नहीं करके not जिनका stolen, सेवा करना and चाहिए, instead उनका you सेवा have आपने served सब that कर personality दिया who है। should be served. इससे उल्टा So you आपको have really served, सौभाग्य and हुआ this is है। your great fortune इसलिए only. अपने आप को So दाता that's why कभी don't मानना नहीं। call yourself as a फिर great जो महाराज giver. जी, वो माता जी को लेकर के आए थे, वो महाराज जी को फिर से एक और बात बतलाई कि देखो हम लोग हमारे मंदिर में जो Then Maharaj ji spoke to that devotee who bought that Mataji. He said that, एक भेंट पात्र रखते हैं, see, we keep donation box in front of Thakur ji.
never actually, never write dan peti, never write donation box. It's not भगवान को तुम दान करोगे like, किसी चीज का, will you ever be able to भगवान donate किसी anything का to the Lord? दान नहीं लेते, Lord never takes भगवान, anyone's donation. भिखारी नहीं है, Lord is not a beggar. भिखारी को दान दिया जाता है, We give जिसको donation to दान beggars. देते हैं वो छोटा होता है, The one और who is donating is bigger than the one who is accepting donation. तो अगर भगवान को दान So if we देंगे, donate something to the Lord, that means the Lord is भगवान छोटे smaller, होते, Lord is और inferior, मैं बड़ा and हूँ, I, being the donor, I am इसलिए superior. भगवान को दान नहीं देते, So we should never donate. भगवान को We क्या never करते हैं? donate. भगवान What we की do? सेवा करते We हैं। serve the Lord. उनके पास दान ला करके दिया नहीं, सेवा करते हैं, सेवा जब करते हैं इसमें भावना क्या रहती है, मैं छोटा And when we हूँ, serve, what is the आप mood? बड़े I हो, am inferior, you are superior. आपका किसी चीज का कोई अभाव And नहीं you है। don't have any kind of deprivation. मेरे को आपके ऊपर दया नहीं आ रही, I am आपके not ऊपर feeling तरस नहीं आ pity रहा। on you that I am giving you this आप तो donation. भगवान हो, You आप are supreme Lord, you are supreme powerful, सारे ऐश्वर्य के you आप are मालिक हो। the master of all आपके opulence. पास किसी चीज का अभाव There नहीं is है। no scarcity in your place. आपके अनेकों सेवक हैं, And you have so many different आपके servants अनेक अनेक सेवक हैं, अनेक प्रकार की सेवा करने के लिए प्रस्तुत who are always ready to serve you in different ways. एक बात, You have no आपके अनेक scarcity, सेवक हैं। plus you have so many servants. That's why उन सब की सेवा में से among, in the service of all those, सेवा ग्रहण कर लोगे, if you accept a little bit of my service, then I will become really ये वाली भावना से fortunate. I will become very blissful. With this mood, one serves the Lord. भगवान की सेवा So, करने में क्या आ जाता है? what सेवा comes in the जो service of the जिसकी Lord? सेवा कर रहे हैं वो बड़ा, The one whom we are serving, that is superior. See, I am the one who is giving. I am inferior. He will accept my thing. Then what will happen? I will become very fortunate. I'll become very indebted. That, oh, you have accepted me, you have accepted my something. In this way, our Maharaj Ji, he explained to that devotee that never ever, never ever शुद्ध जो वैष्णव है उनकी क्या हो, कभी उनको दान नहीं किया जाता। donate. Never ever understand that anyone is donating to the Supreme Lord, to the Vaishnavas, to the devotees. Vaishnavas and the Lord, Hari Guru Vaishnav, they are actually उनके ऊपर दया the करते हैं। object of our service. We serve them, not donate or feel pity on them, or we make them fortunate by doing something for them. No. अथवा सेवा So always keep the name as service box or gift box instead of donation box. हे प्रभु मैं आपके लिए ये कोई भेंट लाया हूँ, बड़े प्रेम With this से mood लाया that, हूँ, oh Prabhu, I have brought some स्वीकार कर लो। gift for you. इस प्रकार की भावना रखना, कभी भी With so much love, please accept this. So always have this mood. Never consider that, oh, I will be donating something to the Lord. So that's why Maharaj Ji explained that Mataji, that never have this mood that you have donated something. No, always feel that you have served and the Lord has accepted your service and the Lord has actually made you fortunate by this. So in this way, Prabhu, here, Prabhu is Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Radha Madhav Ji. ये स्थान अब उन्होंने कृपा करके स्वीकार This किया, place has been accepted ये by उनकी सेवा them. के लिए समर्पित है। This is और given इस स्थान to them के for their अब service. लोग, जैसे लोग अपने घर में जब घर बनाते हैं तो बाहर उसमें क्या लिख करके रखते हैं, किसका घर है? When people build house, construct the house, what they put the name outside? जो They put the name of the eldest person of the house or the most powerful, respectable personality of the house, telling that, oh, this is my name, my house. Now this whole place, this is whose place? This is Shri Chaitanya Mahaprabhu and Shri Radha Madhav Ji. इस स्थान के वही प्रभु हैं।
They are the only Prabhu of this place, the master of this place. And then प्रधान सेवक, their prominent प्रधान servants. सेवक का अर्थ क्या होता है? जो उनकी विशेष रूप Prominent में servant वास्तविक means रूप में those सेवा who करते हैं। serve them वो in कौन a है? special way, in the real इसलिए way. उनके नीचे वहाँ पर So that's why एक below ऊपर them तुलसी you can देवी see there और Tulsi Devi is फिर present, and गुरु on परंपरा below में them, जो below Radha Madhav हमारे and Chaitanya जगन्नाथ Mahaprabhu दास is बाबाजी the महाराज Guru से लेकर Parampara के from Jagannath Das हमारे Babaji सारे Maharaj गुरुवर्ग, to all our ये Guru सभी Vargas. लोग कौन हैं? So all these ये श्री चैतन्य personalities महाप्रभु are whom they और are श्री the राधा prominent माधव जी servant के of Chaitanya ये लोग हैं Mahaprabhu विशेष and सेवक। Shri Radha Madhav ji. ये लोग हैं प्रधान सेवक। They are very prominent इस प्रकार servants. से In this way, और उसमें भी अगर and in विशेष that रूप से also, कहें, if we see तो ये in a स्थान special है way, हमारे this गुरुदेव place is श्रीमद् of our भक्ति Gurudev वेदांत Shri Srimad नारायण Bhakti Vedanta गोस्वामी Narayana महाराज जी। Goswami Maharaj. उन्होंने ही He इस only स्थान पर आकर के came to this place फरीदाबाद में in Faridabad उन्होंने प्रचार कार्य प्रारंभ किया and he started preaching activity और here. श्री And चैतन्य महाप्रभु और Sri राधा Chaitanya कृष्ण की Mahaprabhu जो and शुद्ध Radha भक्ति, Krishna's pure devotion, उसका यहाँ पर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया he started preaching. और And उन्हीं के ही जो आश्रित भक्त लोग his associates, हम भी उसी के अंतर्गत we are also under that. हमारे गुरुदेव के आश्रित भक्तों ने ही Our इस स्थान को जो Gurudev's है, सब प्रकार से associates गुरुदेव only, ही जो गुरुदेव के द्वारा स्थापित ये विग्रह गुरुदेव के द्वारा ही जो अभिलाषा किया गया कि यहाँ पर this स्थान हो vigrah जाए, established by Gurudev only, and he only desired such place here. उसमें गुरुदेव ही वास्तविक रूप में इस स्थान के प्रधान सेवक So Gurudev is the most prominent sevak of this place. उन्हीं के ही दिशा निर्देश अनुसार As per his guidance and instructions, उनकी शिक्षा as per his उनके teachings, आचरण के अनुसार as per his जो conduct, सारा कुछ everything यहाँ पर हो, that वो is here, वास्तविक रूप में उन्हीं को ही प्रसन्न करने वाला उन्हीं के दिशा may निर्देश अनुसार everything that will happen सब here, समय होता रहे। may it keep happening as per his instruction, as per his desire. This is our prayer, this is our desire. तो इसलिए So that's why जो स्थान this place उनसे किसका हो गया? in a special way is whose? श्री चैतन्य महाप्रभु और राधा Our कृष्ण जी Shri का Chaitanya Mahaprabhu, Shri Radha Krishna. And here प्रधान सेवक the most prominent servant is our Gurudev. उन्हीं के ही मत अनुसार As per his philosophical understanding, क्रिया as per his instruction, होनी चाहिए everything should happen और as per his भी वही वाला desire. That's our desire and that's our efforts also. विशेष We are putting efforts in that direction. आवश्यकता क्या होता है? क्यों And आवश्यकता है? now what is the requirement of Mat Mandir, temples and all? There are thousands of temples. मंदिर नहीं है। In which sector of Faridabad there is no temple? We are sitting here, just next to our place is Sanatan Dharma Mandir. निरंकारियों का Then further is Nirankaris. और फिर And then इधर-उधर चारों तरफ जाएंगे if we go here and there, every direction, we will find so many temples. So many temples are there. And then अलग-अलग ये नए-नए स्थान different बना करके places, जगह these को बनाना already so many temples, then again buying new land, bringing up with new projects, construction, new temple. What's the requirement? For that also our Guru Vargas tell one thing. Then what is the difference between temple and mutt? There is a special difference. केवल भगवान का निवास स्थान होता है। In the temple there only the Lord resides, and in mutt उसका वो क्या है? that is वहाँ पर भगवान का वास स्थान तो है ही है। Lord is residing obviously, साथ ही साथ में and with that उनके भक्तों का वास स्थान his होता है। devotees also reside there. और उसमें भी फिर And भक्त in that दो also प्रकार के, different kinds of devotees are there. कुछ Some शिक्षा देने वाले, who give कुछ teachings, शिक्षा ग्रहण करने some who वाले। take teachings, who accept teachings. उसमें अध्यापक भी होते हैं। There are teachers और also उसमें and छात्र भी there are होते हैं। students also in that mutt. इसलिए मठ शब्द So जो है, mutt means उसका एक विशेष अर्थ है it has a special meaning जहाँ पर शिक्षा दी जाती है।
where teachings are given. हमारे महाराज जी Our Maharaj Ji, अभी दूसरे किसी एक स्थान पर थे, he was in some other place. The place name is जहाँ शिला केशियाड़ी, शिला संत गोस्वामी महाराज जी का समाधि मंदिर है वहाँ पर। there. Srila Sant Goswami Maharaj's Samadhi temple is there. इससे आधा होगा Keshiadi. मठ, It must be like half of आधे this. स्थान पर होगा छोटा मठ। It was very small mutt. वहाँ पर जब मठ बना तब हमारे महाराज जी ने कहा केशियाड़ी में बहुत सारे मंदिर हैं, फिर भी मठ बनाने की आवश्यकता क्या So पड़ी? there were already so many temples in that place, but new mutt was created. Why? Because in the temple there are no मंदिर में teachings. लोग जाते हैं, People go in the जाकर temple, के अपनी इच्छा अनुसार but कहीं as per their own कोई desire. जैसे हम सनातन धर्म मंदिर For पास example, में, we have Sanatan उसमें Dharma Mandir nearby. देवी भी हैं, In that there is demigoddess also, राम दरबार भी है, Ram Darbar also, Krishna also, Shankar Ji also, साईं बाबा भी ना, Sai Baba. नहीं पता जो मंदिर I है, don't know, whatever it is. अभी वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार जिसको जहाँ प्रणाम करना कर लो, हाथ जोड़ना So you can कर just लो, pay obeisances as per your desire. Whatever you want to do, you can do by your वहाँ wish. पर कोई विशेष रूप से कुछ बताने वाला, शिक्षा देने वाला नहीं होता। There is no one इसलिए who उसको can क्या give कहते हैं? real सनातन teachings रूप में there. मंदिर। वास्तविक रूप में तो उसको मंदिर भी नहीं कहते, But in real, that's not even a उसको temple. मंदिर भी नहीं कहते। मंदिर का मतलब ही होता है What is एक the ऐसा meaning of स्थान temple? Temple जहाँ is पर that वास्तविक place रूप where में भगवान की एकांतिक रूप में सेवा होती है। the Lord gets served one-pointedly. कहीं पर कुछ मंदिर बना दिया, कहीं कुछ मंदिर, सबका मंदिर होता नहीं। तो जैसे Temple cannot be created एशिया में randomly. इतने सारे मंदिर हैं पड़े, So फिर मठ there were बनाने की already so आवश्यकता many क्या थी? temples in तो महाराज Keshiadi. जी So ने what बोला was the need कि of मठ new जो mutt? है, वो शिक्षा Maharaj Ji केंद्र said है। that mutt is an educational center. इसलिए यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। Here, किसी की शिक्षा, teachings are given जैसे of स्कूल what? में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, For example, तो when वहाँ one पर goes गणित की शिक्षा, to learn विज्ञान की शिक्षा, in school, समाज so there are की different शिक्षा, subjects, mathematics, हिंदी भाषा की history, शिक्षा, languages, सिखाते हैं। इसी तरह से science, मठ में किस all चीज की different शिक्षा topics. देते So हैं? that's in the same मठ way में in mutt. शिक्षा होती है, What teachings are given? वो जो The शिक्षा है, subject. वो कौन सी शिक्षा है? What is the पारमार्थिक subject? शिक्षा। Subject is spirituality. भगवान के साथ में जो संबंध कराने वाली शिक्षा, Trying to understand the spirit, soul, and developing relationship with the एक Lord. शिक्षा केंद्र है मठ। So that's why this is Shiksha यहाँ Kendra, पर means educational महाराज जी बोलते थे institution. कि Maharaj Ji used to say, महाराज जी लगभग जब 85 वर्ष के हो गए, तब वो गए when थे Maharaj दिल्ली Ji में was 85 years old, he लक्ष्मी went to नारायण Delhi मंदिर, in Lakshmi Narayan Mandir. बड़ा वाला बिरला मंदिर जिसको बोलते हैं, राधा कृष्ण का बिरला मंदिर, वहां पर महाराज जी गए और वहां पर जाकर के ठाकुर जी को प्रणाम So किया। Maharaj Ji went 85 there वर्ष की आयु में and paid obeisances to the जब Lord साष्टांग at the age of प्रणाम 85. किया ठाकुर जी When को, he paid direct तब obeisances, वहां prostrate पर पुजारी obeisances, जो हैं, then वो महाराज जी के there, पास आ गए। Pujari, he came वो to भी 80 Maharaj वर्ष Ji. की आयु के। वो कहते हैं महाराज जी को, Now he was कि 80 years महाराज, old. यहाँ पर तो बड़े सारे साधु लोग The आए, priest, he said that Maharaj, so many saints came कितने here. सन्यासी आए, कितने साधु आए, So many sannyasis, so many मगर sadhus आपकी तरह came. किसी ने यहाँ पर प्रणाम नहीं किया आज तक। But no one कोई paid आता है, obeisances हाथ like जोड़ के you. प्रणाम करता है, Some come कोई and pay सीधा भगवान के obeisances with चरणों folded में hand, अपना मस्तक रख or करके someone प्रणाम pay करता है। obeisances in a straight आपने way. मगर जिस तरह से But प्रणाम you did किया, in a different इससे way, पहले तो keeping नहीं the किया। Lord on your left. I never saw this. आपने ऐसा क्यों किया? Why did you do like this? हमारे महाराज जी ने उनको कहा, So our कि Maharaj शास्त्र Ji में gave an लिखा है, answer that this is written in the scriptures. स्ववामे Swavame प्रणमेत विष्णु, Pranamet Vishnu. अपने वाम अंक में भगवान को रख करके तब प्रणाम करना चाहिए। Keeping Lord on the left side, one should pay obeisances. गुरु को सामने And से करते हैं, one should pay obeisances to Guru भगवान विष्णु को in front. सामने से प्रणाम नहीं करते, उनको वाम भाग में रख करके प्रणाम करते हैं, लेफ्ट साइड में भगवान रहेंगे, लेफ्ट हैंड में, और तब एक व्यक्ति प्रणाम करेगा। ये शास्त्र में लिखा है, The Lord will stay on the left side, and then भगवान विष्णु को अपने वाम the भाग में devotee will रख pay करके obeisances. तब प्रणाम करना चाहिए।
इस प्रकार से जब बताया, So in this way, तो when he कहते हैं, told, महाराज जी, then Maharaji मैं तो says, 60 साल से यहाँ पूजा कर रहा हूँ, आज तक किसी को देखा ही नहीं था कैसे प्रणाम करना होता। the और priest कागज says में that ऐसा I have कहा been गया। serving here for the मैं last एक 60 मिनट years. कागज I और never कलम ला saw, रहा हूँ, I never saw आप एक anyone बार doing फिर like बोल this. देना ये वाला श्लोक, मैं लिख लूंगा। He said और that मैं I'll भी आज से bring फिर ऐसे ही प्रणाम pen and करूंगा। paper and you repeat तो that महाराज जी slok, I'll कहते write हैं it and कि I'll pay देखो 60 obeisances साल like से this only. मंदिर में रह रहे, So Maharaj is कितने saying साधु that आए, कितनी कथा हुई, 60 किंतु इनको आज years तक प्रणाम करना भी किसी ने सिखाया he नहीं। had been staying in the और temple, मठ so में many आने saints पर एक came, व्यक्ति का क्या होता but है, he does not know how to pay मठ के obeisance also. प्राचीन जो रहने वाले व्यक्ति, उनको केवल And प्रणाम करते in the mud, देखते हैं। even उनको a new देखने से person who लोग comes, अपने आप से when he सीख see लेते other हैं, devotees उन्हें paying कहना भी नहीं पड़ता। obeisances, they just learn by themselves. तो They are इसीलिए not even मठ का taught. मतलब क्या हुआ? What is the meaning यहाँ of पर mud? अपनी आप आने से क्या मिलता It is the है? place शिक्षा where मिलती है। just कैसी by वाली शिक्षा? coming we मनगढ़ंत get शिक्षा teachings, नहीं, not शास्त्र में whimsical जैसा लिखा teachings, हुआ, not वैसे वाली random शिक्षा teachings, की but प्राप्ति teachings as होती per है। given in the तो Shastras. इसीलिए ये वाला जो स्थान, So ये that's उसी why this प्रकार से place, हमारे गुरुदेव और so in the हमारे same जो way, our गुरु Gurudev परंपरा, and our शुद्ध Guru भक्त लोग जो Parampara, सारी our कथा pure वो devotees, करते हैं, आचरण करते हैं, they पालन with their करते हैं, जैसे pure सेवा conduct करते they हैं, teaches. उसी प्रकार की सेवा की हम लोग स्वयं भी So अच्छे से शिक्षा को पालन करें, we आचरण also करें, follow those और दूसरे conduct लोग भी उसी and प्रकार से शुद्ध others रूप also में in a pure भगवान way की जो सेवा है, do उनकी the जो service शिक्षा of the है, Lord. उसको प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से ही हमारे गुरुदेव की कामना थी कि This यहाँ was पर the हमारा मठ हो। goal of our Gurudev, that स्थाने स्थाने desire of our Gurudev, that we also have a विष्णु mutt जन here. मेरी लाभ वैष्णवगण, स्थान स्थान पर भक्त क्यों जाते हैं? Why devotees go to हमारे different गुरुवर हमको क्यों places? भेजते हैं? Why our Guru भगवान Varga की send शुद्ध devotees at different जो places? सेवा कथा, उसको सब जगह पर प्रचार करने के उद्देश्य से, With the purpose of इसलिए preaching the words of Guru ये मठ Vargas in मंदिर everywhere. का उद्देश्य। यहाँ पर एक और उद्देश्य क्या है? मठ में भागवत की जो कथा, भगवान की जो कथा, भगवान की कथा का मतलब भगवान ने जो अपने मुख से कही है, कृष्ण ने अपने मुख से क्या सुनाया है सबको, क्या संदेश Another दिया purpose है। of mutt is श्री that चैतन्य महाप्रभु Bhagavad ने Katha, all the इस जगत instruction, में the अवतरित teachings होकर of के Krishna, Sri क्या Chaitanya उपदेश Mahaprabhu, प्रदान he किए appeared हैं। in this world, what teachings he उसका has नाम क्या given. होता है? जो कथा वो अपनी So, आप से सुनाते हैं अपने विषय में, that मेरे Katha को which क्या they अच्छा speak by लगता है, themselves, about मैं themselves, कौन हूँ, that who am I, what I like, किस what I प्रकार dislike, से मैं मेरे में क्या क्या गुण हैं, what qualities I have, और मैं किस प्रकार से and कृपा करता हूँ, how I किसके साथ perform मैं अपना and give संबंध mercy, बनाता हूँ, how किसके I साथ मैं develop नहीं relationship, बनाता हूँ। with whom I don't develop तो ये relationship. भगवान की सारी अपनी So all these हृदय से बोली गई उनकी जो सारी words बातें, spoken from the heart of the Lord, उस सारी बात को क्या कहते हैं? हरि कथा। all these हरि things के are द्वारा called as Hari अपने ही Katha. विषय में ठीक ठीक रूप में जो अच्छी प्रकार से जो उनकी जानकारी उन्होंने प्रदान की है, उस Means सारी बात को all क्या the कहते right हैं? information हरि about कथा। Hari, that is called Hari और Katha. उनके भक्त लोग, And the श्री devotees कृष्ण के जो भक्त हैं, of Shri Krishna, परिकरगण हैं, वो कौन है? the associates, who are कृष्ण they? के परिकर राधा रानी, ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा चंपक Radha Rani, Lalita Sakhi, Vishakha माता Sakhi, यशोदा, Mother नंद Yashoda, बाबा, Nand Baba, और and कृष्ण के सखा सुदामा, Krishna सुबल Sakhas, इत्यादि। Sri Dam, Subal and all. ये जो अपने मुख से सारी बातें कहते हैं, So everything that they say अपने from their हाथों mouth, से, अपने नेत्रों से जो सारी सेवाएं करते हैं, all the कृष्ण की, services to Krishna उस that they do सारी from their बातों को hands, from सुनना, their जानना, eyes, इस hearing सबको all क्या those कहते things हैं? and हरि trying to कथा। know that all of this is हरि called के Hari विषय Katha. में ठीक ठीक रूप में जो जानकारी देते हैं, The one who gives ये right सारे information कृष्ण के about Hari, परिकरगण हैं। that these are ये all कृष्ण के विषय में associates ठीक-ठीक of रूप में Krishna. जानते हैं। They know about Krishna very well. जो ये कृष्ण स्वयं So कथा that's बोलते why हैं, जो Krishna, चैतन्य महाप्रभु जो कहते who हैं, himself speaks भगवान Katha, रामचंद्र ने जो कहा, that thing which भगवान Chaitanya नरसिंह Mahaprabhu देव ने says, जो कहा, that thing which Lord Narsingh Dev और Ji उनके said, जो
ये परिकर गण and all सारी the कथा associates, सुनाते हैं। the उसका katha नाम क्या that they होता है? say, हरि कथा। that is called इसमें Hari अपने Katha, मन गढ़ंत कोई बात नहीं होती। in which there is nothing मैं कल्पना man-made करूंगा or कुछ, imaginary. भगवान ऐसे हैं, Oh, भगवान I'll ऐसे imagine दिखते हैं, the Lord भगवान is ये like करते this, हैं। Lord do this, अभी Lord do मेरे that. कहने में नहीं कहने में कुछ नहीं जाता। So, me saying that, not saying that does चंडीगढ़ not में create हम a लोग किसी difference. एक माता जी के पास में In गए। Chandigarh, we went to one उनके Mataji. पति जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। His उनके father घर पर to the work of हम property लोग dealer. गए। His husband, sorry, her husband. जैसे ही When हम we went पहुंचे, to the अभी house, 10 we मिनट just हुए reached थे। there and it was just उनके 5-10 बच्चे ने minutes. आकर के बताया And कि आज ना एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पिताजी को बड़ा लाभ हुआ है। the son came and told that a person bought property from my father and the father has got a great पिताजी को बहुत सारा profit. लाभ हुआ है। उसकी माता जी कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। The mother says, oh, very nice. कर रहे थे, वो खरीदे We have been waiting for so long that, oh, he should buy, he should buy. Oh, saints came in our house and at once we have got this great news that such great profit we have got. उसका पति आया 10-15 मिनट The के बाद husband comes वो 15-10 बोलता है minutes कि later वो and says, पागल आदमी एकदम से हाँ किया, "Hey, 5 that मिनट के बाद में ना foolish करके person, चला he just said yes and after 5 minutes he said गया। अब no." उसके मुख से क्या निकलेगा? Now what she अब will साधु say? वहीं बैठे हुए, Now the sadhu, the saints were sitting there पहले साधु in बैठे front of हुए, them. उससे मैं क्या बोला, इनके आने से इतनी बड़ी खुशखबरी मिली, इतना अच्छा हो गया। Saints were और थोड़ी there देर and के बाद में 15 मिनट she के was बाद में saying क्या in front of बोलेगी? them that, oh, because of वो तो saints, व्यक्ति ने तो मना कर we दिया got the लेने deal के done. लिए। But अब that deal साधु got के विषय में क्या cancelled. बोले? Now what मुंह can छोटा she हो say? गया एकदम से। Her face became तो अभी completely small. ये वाली जो भावना, So this kind of ये तो mood साधारण लोगों की भावना is the mood of ordinary people. इससे विशेष कुछ आता है जाता है। उसने जो बोलना था पहले बोल दिया, उसकी बात का कुछ वजन है। So there is any gravity of her words. जो मन में आया था बोल दिया था, Whatever थोड़ी came देर in the बाद mind, she अब said, कुछ बोल ही नहीं पा and रहा। now she is not able to say anything. किंतु जो हरि कथा होती है वो कैसी वाली होती है? But Hari Katha बड़ी is गुरुत्वपूर्ण। very full of उसमें gravity. कभी परिवर्तन नहीं होता। In that there is उसके no द्वारा सबका changes. सब समय परम मंगल होता It's है। always fixed उसके द्वारा and बड़ी there is विशेष so शिक्षा much मिलती है। auspiciousness that उसके comes द्वारा all the जीवन time. बदल जाता So है। much real teachings उसके comes. द्वारा Through हृदय that बड़ा पवित्र life हो जाता changes, है। the heart becomes व्यक्ति purified. कभी किसी को The कष्ट नहीं दे person सकता, never gives pain कभी to चोरी नहीं anyone, कर never सकता, steal, झूठ नहीं बोल never सकता, lie. कभी किसी प्राणी से हिंसा नहीं कर सकता, Never कभी किसी ever का अनादर can नहीं कर सकता। actually कब? अगर ठीक रूप में disrespect हरि anyone. कथा वाली जो शिक्षा है If वो in a अगर real उसको way मिल जाए, he is तो इसलिए getting भागवत Hari की Katha properly. मतलब कि भगवान So that's की why और Bhagavad Katha भगवान के means परिशुद्ध भक्तों की कथा है। Katha of Bhagwan and the pure devotees. So that's why the purpose of establishing temple, mutt, is that all the time Hari Katha should happen. Discussion about Lord Hari should be there. There should be service of Lord Hari. So that's why the name of this place is, this mutt is called as Krishna Sansar. ये कृष्ण का संसार है। This is Krishna's गुरु वर्ग क्या world. उपदेश करते हैं? That's why our Guru Vargas, they instruct, Krishna samsar karo chhadi कृष्ण का anachar. संसार करो, Perform Krishna samsar. कृष्ण के संसार में रहो। Live in जहाँ पर Krishna's कृष्ण का world. संसार मतलब जहाँ पर मेरा Krishna अपना, sansar means मेरी आंखों को सुख जिसमें मिलेगा वो करूँगा नहीं। I will not see what my eyes like. I will not hear what my ears like. मेरे अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं करूँगा। I will not do anything for my own happiness. I will do everything for Krishna's happiness. उसको कहते हैं कृष्ण संसार। That is called Krishna samsar. ये कृष्ण संसार है। This is Krishna samsar. जहाँ पर कृष्ण की That सेवा means के लिए the place राधा where रानी for जैसे the service कृष्ण of की सेवा Krishna, करवाना चाहती है, the way करना Radha Rani चाहती है, wants to serve उस Krishna प्रकार से and करने get the के लिए service ये of स्थान Krishna है। done. So doing like that, this is the रसोई place. घर में कौन That's रसोई why बनाता है? who actually makes, कृष्ण के लिए रसोई who बनाती है actually राधा cooks, रानी। who actually इसलिए यहाँ cooks पर जो रसोई for घर Krishna, है, वो किसका रसोई घर only है? Radha Rani. So the राधा kitchen रानी here का। is the kitchen of Radha Rani. यहाँ पर जो सारे सेवक वो All the किसके सेवक servants हैं? here, राधा they are रानी के servants सेवक। of कृष्ण Radha किसी Rani. से भी
साक्षात रूप में सेवा नहीं लेते। Krishna never accepts direct service from राधा anyone. रानी कहती हैं, Whatever ऐसे Radha वाले Rani उस says, राधा रानी की ही सेवा लेते हैं। he only और accepts service of राधा Radha रानी Rani, के कहे अनुसार जो and सारा कुछ करता है, all those who उनके do साथ as में per ही the संबंध instructions of बनाते हैं। Radha ji, तो he इसीलिए creates ये relationship जो with them सारी only. चीजें So that's why all उनकी these things थोड़ी थोड़ी कहने की इच्छा थी, इसलिए वही कह I रहे हैं। wanted to say भागवत की about कथा, mud. यही भागवत जो है, यही चीजें भागवत सिखलाती है। This is what Bhagavad इसलिए teaches. भागवत कथा, That's why Bhagavad इसलिए Katha. हरि कथा। That's why Hari Katha. सभी क्या बोलते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भागवत की कथा सुन रहे हैं। So that's why we are hearing Bhagavad Katha here. भगवान की सेवा ये कौन कर सकता है? Bhagavad Katha, Bhagwan Ji's service, who can do this? यहाँ पर विशेष रूप से भागवत की कथा करने वाले कौन हैं? Who is the person who is speaking Bhagavad Ji? भ्राता, Mainly our Guru Brata, our God brother Shripad Bhaktivedanta Siddhanti यही Goswami सारे Maharaj. इन्होंने ही He only क्या किया है कि मैं यहाँ पर has भागवत taken की this कथा decision सबको that सुनाऊं। I will speak Bhagavad Katha for 7 तो इसलिए days. ये कौन हो गए? So he is who? भागवत की कथा के वक्ता। He is the speaker. भागवत की जो कथा करता है व्यक्ति, The one who performed ये Katha of सब Bhagavad Ji. इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, So what is the क्या गुण qualification? होने चाहिए, कौन भागवत की कथा सुना सकता Who है? can speak Bhagavad ऐसे Katha? तो कोई भी सुना सकता है। Anyone can speak if there is no किसी qualification. व्यक्ति को 1000 रुपए दे दो, You just give 1,000 rupees. 2 दिन कुछ पढ़ करके नोट्स बना के, He will also पढ़ read करके something, make some हम लोगों को notes, सुना देगा। memorize it, and can speak Bhagavad कोई भी Katha. सुना देगा। Anyone can speak. जैसे बहुत सारे For चीजें example, काम करने there वाले are लोग हैं ना, so many people doing हमारे को different लकड़ी का things. काम करवाना, सारा पैसे दो, लकड़ी का काम करने वाले मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। बिल्डिंग बनानी है, पैसा दोगे, बिल्डिंग बनाने वाले लोग मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। If you'll give money, you will get labor मेरे को also. If कपड़े you'll give खरीदने money, हैं, कपड़े बांटने you हैं, will get. पैसे खर्च करूंगा, clothes also. कपड़े खरीद पाऊंगा ना, नहीं खरीद पाऊंगा? If I just खरीद पाऊंगा। put इसी money, तरह I से will be मेरे को able to भागवत buy की कथा clothes सुननी है। and distribute also. पैसे So दूंगा, in the same way, और if किसी I को want to कहूंगा, hear मेरे को Bhagavad, भागवत की I कथा can सुना, give तो some भागवत money की कथा सुना and देंगे। I will ask someone to speak Bhagavad Katha. So that person will speak Bhagavad Katha to तो me. कहते हैं कि भगवान की सेवा, So for that it has been said that Bhagwan and his service, Bhagavad Katha, ये सारा कुछ पैसे के विनिमय से नहीं होता है। all these things do not happen जो व्यक्ति पैसे by के money. विनिमय में ये सारा कुछ सोचते हैं कि हो सकता in है, exchange of money. वो कहते हैं No. बिल्कुल नादान Those who बालक think that this जैसे। can happen by the exchange of money, they are बिल्कुल like नादान an बालक, उनको immature कुछ नहीं child. पता। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरी माँ मर गई है, For example, if a person says that माँ my के mother जैसा is प्यार, dead, पैसा लेकर के Now, मेरे को कोई माँ के जैसा प्यार दे दे। someone can take money and give me affection like a mother. Can a person buy affection like a mother मेरी माँ मर गई, by giving अब मैं money? किसी को पैसा No. दूंगा कि मेरे को बिल्कुल वैसे वाला प्यार करो, अंदर हृदय से भी बिल्कुल वैसे वाले बन जाओ जैसे मेरी माँ है, माँ थी। I'll give you money, you become like my mother. Exactly. माँ तो Can माँ it ही happen? होती है। No. पैसे से क्या Mother माँ is खरीदी जा mother. सकती है? Can buy money, पैसे we से can क्या buy माँ जैसी a माँ mother. खरीदी जा सकती Can है? buy money, we वो can तो होता नहीं। buy the moods of इसी a mother. प्रकार से No. भगवान की कथा, In the same way, ये कोई व्यक्ति ऐसे वाला नहीं कर सकता। माँ के जैसे रोल बहुत सारे लोग कर सकते हैं। many can play the role of a mother in रोल कर सकते हैं। TV, in नर्स film, भी माँ का रोल movies. करती है, कुछ-कुछ। Nurse also plays होटल में role खाना of खाने mother. जाओ, वो भी माँ का रोल करते हैं, खाना The बनाते हैं, waiter पैसे also दे देते हैं, पैसे दे दो। Play a role of mother. वास्तविक But the रूप में तो moods, नहीं कर सकते। they इसी cannot be प्रकार real. से भगवान की जो शुद्ध कथा है, वो केवल मात्र भगवान के शुद्ध भक्त लोग ही गान करते हैं। उसके पीछे उनका किसी भी प्रकार का कोई जगत का उद्देश्य नहीं होता। only pure devotees जगत actually, का कोई उद्देश्य, they जिसके glorify the मन में Lord, कोई भी they speak जगत का, Bhagavad. कि They मेरे don't को have ये any कथा material बोल करके desire. पैसा मिलेगा,
ये कथा बोल करके मेरे that को speaking this चेले katha, मिलेंगे, I will get ये money, कथा बोल I'll get करके followers, मेरा ये काम बनेगा, I'll get मेरी पूजा होएगी, मेरे worship, को लोग बड़ा सम्मान करेंगे। इस किसी I भी will get कारण से अगर prestige. कोई भागवत So with करता any है, of such mood, भगवान की one सेवा performs करता है, Bhagavad, तो one उसको कहते हैं serves the बिल्कुल Lord, नादान बालक। then he is just ऐसे होता a नहीं। mature boy, भगवान child. ऐसे वाले भक्त So this is not the जिनका case. कोई जागतिक कामना नहीं है, एक इच्छा करते हैं, भगवान को Those दर्शन devotees who just want to satisfy the Lord and nothing भगवान की else, कथा बोले बिना रहा नहीं जाता। and they cannot stay without Hari बात Katha, किसकी करूं? without speaking भगवान की about बातें the करना Lord. चाहता हूं सब समय। About whom should I speak? जिसका I इस always प्रकार want का to speak स्वभाव about the बन जाता है, Lord, जो ऐसे वाला the one साधु who होता है, develops such mood, such उसको ही क्या है, nature. So वो भागवत की कथा करते हैं। he ऐसे only व्यक्ति speaks को Bhagavad बोलते Katha. हैं, ये भागवत के Such वक्ता person हैं। is called as the speaker भागवत की of कथा सबसे Bhagavad, पहले किसने सुनाई थी? who विशेष spoke रूप में Bhagavad बहुत Katha सारे first. लोग जहाँ पर बैठे थे, वो भागवत की कथा सुनाई थी शुकदेव गोस्वामी ने। Bhagavad Katha was spoken by Shukdev Goswami. And who heard? सुनी थी एक तो है विशेष व्यक्ति, उनका नाम परीक्षित महाराज, और उनके साथ में बहुत सारे लोगों ने बैठ One कर special सुनी। person, Parikshit Maharaj, and then there were जिन्होंने सुनाई many थी, other उनका devotees गुण sitting. क्या था? So now the one who spoke, what was his quality? ऐसे वाले एक स्थिति में थे, He was in such a उनको भूख नहीं position लगी, where he never felt hunger, उनको प्यास नहीं he लगी, never felt thirst, उनको कभी कोई व्याधि नहीं आती, he never got diseased, उनको कभी कोई थकावट नहीं होती, he never get उनको tired, सर्दी नहीं लगती थी, never feel cold, उनको गर्मी नहीं लगती never थी, felt hot, उनको वस्त्र नहीं चाहिए होते थे, he never needed clothes, उनको रहने के लिए कुटिया he नहीं never चाहिए होती needed थी। a hut to stay. सामान इकट्ठा करने के लिए कोई ट्रंक चाहिए, सामान ही नहीं है, ट्रंक चाहिए, Does not have any belonging or जिनके any पास कुछ भी नहीं requirements, है जगत के अनुसार, who has nothing as per this एक कपड़े का material world, टुकड़ा भी नहीं है जिनके पास, does not have even the one piece of cloth. सारी की सारी उनकी जो वास्तविक संपत्ति है वो क्या All है? his real wealth वो is भगवान। the Lord. सोचते भी उनके बारे में है, Thinks about him, बोलते भी उन्हीं के speaks बारे में about है, him. जो कुछ करना है उन्हीं के लिए करते हैं। Whatever he wants to do, he do for him. ऐसे वाले शुकदेव गोस्वामी, Such personality Shukdev ये Goswami. कौन है? भागवत के Who is he? वक्ता। He is the speaker of Bhagavad. उनकी कोई प्रशंसा करे, If anyone उसके प्रति appreciates प्रसन्न him, नहीं होते, he does not get satisfied उनके by ऊपर that. कोई धूली मिट्टी कंकड़ डाले, कोई कुछ करे, उससे भी कुछ अप्रसन्न If someone नहीं is होते। throwing stone or sand जब at वो him, गए थे कथा does सुनाने not के get लिए, distressed by that. परीक्षित महाराज जी के When पास he गंगा के तट पर, Came to speak Hari Katha near Parikshit Maharaj. It's the place named Shukartal. गंगा के तट पर परीक्षित महाराज बैठे थे, On the banks of शुकदेव Ganges, गोस्वामी Parikshit वहाँ पर Maharaj ji जाएंगे। was sitting. Shukdev Goswami will go there. And on the way, what happened? उनको देखा किसी ने कि ये तो नवयुवक एकदम से 16 वर्ष के बालक जैसे, We saw that, और oh, this is रंग just का very young जो boy, उनके शरीर का रंग 16 है, year वो old. कैसे वाला है? And how his एकदम से कृष्ण की complexion भांति is? श्याम Complexion is like Krishna, blackish complexion. केश खुले हुए हैं, Hair वस्त्र are पहने open, नहीं हैं, दिगंबर, no clothes, दिगंबर मतलब completely दिशाओं को ही अपना अंबर वस्त्र naked. मानने वाले दिगंबर is Digambar who accepts all the direction as his cloth. चल रहे हैं, तो लोगों को लगा When बच्चों he is को पहले, walking, ये कोई पागल है, इसलिए किसी ने उनके ऊपर मिट्टी डाली, everyone किसी ने is उनका हाथ assuming पकड़ that के he इधर is से उधर a करने का madman. प्रयास किया, So they are throwing किसी ने stone, कुछ किया तो they are किसी ने teasing कुछ him किया। and throwing वो sand अपना on him. जैसे थे उसी प्रकार से शांत But रूप he में अपना आगे बढ़ते गए, was just completely किसी की तरफ neutral, अधिक ध्यान देते ही नहीं, and he, आगे without बढ़ते गए। thinking about किसी ने उनके anyone, केश को पीछे से पकड़ा, considering उससे anything, कभी भी क्रोधित नहीं he हुए, just kept walking. किसी को कुछ कहा भी नहीं, He didn't say anything to अपने anyone. बारे में भी कुछ बोलते नहीं। He didn't introduce अभी himself. जब ऐसे बच्चे गांव के Now कुछ when- कुछ और लोग भी इकट्ठे होकर के जब पहुंचे सभा के पास में, बिल्कुल वहां जाकर के क्या देखा, सारे साधु जो वहां All आए these थे, villagers, उनको when they देखने went से near सारे उठ that करके खड़े हो assembly, गए। they found that all the saints present in that assembly, they just saw the Shukadev Goswami सारे लोगों and ने सिर झुका they all दिया, stood up and they all paid उनको सारे obeisances. हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, Everyone started paying obeisances और to उनको him. बड़े आसन पर बिठाएंगे, बड़े आदर से उनको लेकर के जाएंगे, And with सब so much यहाँ respect, बैठो।
They are bringing him तो जो to लोग the highest platform पहले मिट्टी डाल रहे to sit थे, on. Now वो the जो same उनको मार रहा villagers था, who were वो यही throwing पकड़ रहा था, pebbles, एकदम से हाथ पांव हो stones, गए, आश्चर्यचकित throwing रह गए। dust, ये क्या है? they हम सोच रहे थे ये suddenly पागल got कैसे है? surprised. They thought that we were thinking that this is ये तो बहुत a बड़ा madman, व्यक्ति है। but this seems to be a very superior हमारे सारे साधु personality. लोग इसका क्या कर रहे हैं? All these great बड़ा saints, सम्मान they कर are रहे हैं। respecting him so much. इस प्रकार से जब So in this देखा, way, when he सारे saw, पीछे हट गए वो लोग तो। everyone just stepped back. इधर सुखदेव गोस्वामी का क्या हुआ? And here, Shukdev जब वो Goswami, लोग मिट्टी पत्थर कंकर डाल रहे थे, when they were उनका कुछ throwing नहीं हुआ। all the और bad जब things, यहाँ पर लोग खड़े हो he गए, never सम्मान felt कर anything. रहे हैं, बड़ा आसन He दे रहे never हैं, got तब any भी kind उनको of कुछ नहीं हुआ। transformation. And in the same way, when he is getting all this respect, again he is not getting any transformation in the form of happiness. समचित्त So he was not distressed nor happy. He was same consciousness इसलिए in all situations, different extreme situations. Why? Dehamre Smarit Hari. भगवान हरि के चिंतन में रत They are always absorbed in remembering Hari. What the people of this world are doing, they are respecting, they are appreciating, they are rejecting, they are humiliating, हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे गंगा नदी, does not have any connection. वो अपना Our बहती Maharaj जाती ji है। gives an उसने answer, कहा जाना like example, the Ganga उसने river जाना समुद्र just के keeps पास on flowing. It has a goal that it wants to reach on to the ocean. And on that way, if गंगा की someone आरती उतार रहा है, is performing कोई गंगा arti में to पुष्प Ganga, डाल रहा है, someone is कोई adding flower to उसमें दूध Ganga, अर्पित कर रहा है, अभिषेक someone कर रहा है is गंगा adding का, milk कोई to गंगा जल Ganga को लेकर doing के गंगा abhishek, की पूजा कर रहा है, someone कोई is प्रणाम worshipping कर रहा Ganga, है, someone is paying कोई गंगा obeisances, की स्तुति गा रहा है, someone is तो भी गंगा अपना बहती जा रही है, glorifying Ganga, but the और Ganga कोई is उसमें still मिट्टी डाल रहा है, flowing कोई थूक डाल continuously. रहा है, And if someone is कोई spitting on अपनी Ganga, मिट्टी धो रहा है, someone is washing the किसी stool, ने कोई नाली अपनी घर की गंगा में डाल दी, someone is just गंगा passing को urine, ना तो throwing all the किसी sewage. से कुछ व्यवहार करने से फर्क So पड़ता now है, Ganga is still और flowing. ना ही दूसरी तरह से So in any होता case, है। Ganga is completely गंगा indifferent. जिस प्रकार से पवित्र, The way Ganga is so उसको pure, जगत की कोई चीज स्पर्श नहीं करती, nothing of this इसी world प्रकार से touches सुखदेव Ganga. In the गोस्वामी, same way, Shukdev उनको Goswami, जगत की कोई चीज nothing of this world असुविधा में नहीं ला करके खड़ा करती। creates any kind of obstacle. पूरा ध्यान, All the focus, all the energy वो पूरी तरह से किसके तरफ समर्पित होते हैं? भगवान की ओर is जाए। completely directed towards इस प्रकार के जो Bhagwan. वक्ता, उनको कहते हैं Such kind of वास्तविक speaker वक्ता। are called as real speaker of Bhagavad. शुद्ध वक्ता का मिलना बड़ा कठिन है। It's very rare to find a pure speaker of इस Bhagavad. प्रकार से ऐसी स्थिति वाले हों, Those who are at that platform, who does not want anything of this material world, who just want उस Lord, प्रकार के वक्ता। that kind of speaker. इसलिए हमारे That's why महाराज our जी Maharaj ji आप here, लोगों को जो कथा सुना रहे हैं, the katha that he is उनका speaking, उद्देश्य क्या है? what is his purpose of speaking? धन उद्देश्य नहीं है। His purpose is not wealth. आप लोगों से इनको सम्मान मिले, वो भी He will उद्देश्य get नहीं है। respect from you all. That's not the purpose. किसी भी प्रकार की जागतिक कामना, No material desire is the purpose. भगवान प्रसन्न हो, Only for the satisfaction of the Lord. सभी लोगों को श्रवण करने के लिए मिले। May everyone gets to hear the glories of the Lord. May everyone gets absorbed in Krishna consciousness. That is his own pure desire. इसलिए हम लोग बड़े That's why सौभाग्यशाली we are very, very, very यहाँ पर हम fortunate लोगों that को उनके here, मुख से कथा, क्योंकि भागवत में बड़े सारे प्रसंग हैं, we are hearing katha from him. थोड़े-थोड़े See, करके हम लोगों को सुना रहे हैं। because there are so जो many भी व्यक्ति ध्यान से श्रवण करेगा, उसका अपना ही परम मंगल होगा। इसलिए points, ये there are so many वक्ता, different pastimes भागवत के जो श्रोता हैं, उनका भी गुण होना चाहिए। in Bhagavad जैसे अध्यापक का अगर विशेष गुण हो, that we are hearing from Maharaj ji. Now in the same way as there is qualification for the speaker, बिल्कुल पागल the हो, same is the requirement of qualification of the hearer. If the hearer is just like a pile of soil, जो छात्र he will be able to होता learn है, anything? No. उसमें भी योग्यता The होती student है, also विशेष has प्रकार की। qualification, special qualification. That's why how should the listener be? सुखदेव गोस्वामी तो वक्ता, श्रोता Shukdev कौन है? Goswami परीक्षित महाराज। is the speaker. Who is the listener? उनको Parikshit भगवान में Maharaj. दृढ़ विश्वास है।
he has strong faith in the Lord. That yes, Lord is there, Lord's form is there, Lord's भगवान के गुण हैं, shape is there, Lord's qualities are there, Lord hears everything, He sees everything, everyone. उनका दृढ़ विश्वास है He has strong faith on मन में this, बड़ी अच्छी कामना है and also has a very strong mood in the heart that बहुत सारी चीजों में लगा दिया really मैंने क्या क्या सीखा किस किस के बारे में जाना मेरे को किंतु अब भगवान के विषय में lived my life in so many different भगवान के विषय में सुनने की wasteful ways. कोई But I now really want to hear about the Lord. Please someone give me proper information about the Lord. Please give me proper information. Tell me nicely that where He stays, whom He loves, how He is approachable, how can I meet with Him? Can I really develop relationship with Him? These kind of things. The one who has such desire to understand. उनके पास पहुंच गए उन्होंने कोई जगत की कामना नहीं की मेरे को मृत्यु से बचा लो मेरी 7 दिन बाद मृत्यु है Parikshit Maharaj did not say that, oh, please protect me from death. मेरा बच्चा अभी छोटा है राजपाट कैसे संभालेगा कुछ न कुछ और कुछ भी इस प्रकार का उनका नहीं है उनका क्या कामना है He does not have any material desire while approaching Shukdev Goswami. There is only one special desire, that is, सचमुच में बता दो मेरा कर्तव्य क्या है please tell me properly that what is my duty. कहना नहीं है I don't want to say that सचमुच में मेरे को बता दो कि मैं अपना I want to escape that. No. Just tell me all these 7 days, how should I pass? What is the real duty at this time? बच्चे ने अभी एक श्लोक सुनाया था Our Prabhu, little boy, spoke one shloka. कौन सा श्लोक था Na उसका दूसरा वाला Nanaka Prishta. न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए योग की स्थिति नहीं चाहिए मेरे को स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए मैं ब्रह्मा का पद नहीं चाहता हूँ I don't want anything. I don't want to become Indra. I don't want heaven. I don't want Dhruva's planet. Oh Shukdev Goswami, just tell me mercifully that Supreme Lord Shri Krishna, क्या-क्या करते हैं what all activity he is doing, what he likes to do, how his devotees are. Just tell me all these things. I don't want to know anything else. So it's said, Mataji brought that grandson. 8-9 साल का है अभी जिस दिन कथा में माताजी लेकर के आई So the day, one day that Mataji brought the grandson in the temple. Now it was Dashmi, means 10th day. Now in the temple, in the mart, there was this Maharaji who spoke about Ekadashi Katha, that one should follow Ekadashi. Those who eat grains on that day, they eat sin actually. Everyone should follow Ekadashi from 8 years to 80 years. So he started speaking Katha like this. And the boy, he heard that Katha. Next day was Ekadashi. The little boy says to the mother that, Mataji, I don't want tiffin today, lunch box. No. If there are fruits, just give me some fruits. If no fruits, just give me some money. I will buy fruits and I will take fruits only. Today is Ekadashi, I'll do Ekadashi. I'll follow that. So the mother, she called the grandmother. Oh grandmother, please come here. This little boy is saying that I'll do Ekadashi. Now the grandmother, she came. She holds the ear of the boy and says that, hey, what are you saying? The boy says, I am doing Ekadashi. Hey, what? I am doing Ekadashi. Hey, don't say about Ekadashi. Are you mad? You will do Ekadashi. That's why I don't take you to the temple. Little boy, just a mad person, whatever you hear, you want to do that. Why did you hear Katha so nicely? See me. I have been to temple for 25 years. I every day take one, like I just hear everything what they say, but when I come out of the temple, I just forget everything. I just don't take those teachings in my house. I never bring those teachings in the house. So the boy says, Dadi, grandmother, I will tell your reality to Maharaji tomorrow in the temple. Go. You can tell. You can do whatever. You want to do Ekadashi? Just shut up. No Ekadashi.
So speaking like this, Maharaj used to say की कथा सुन that रहे हो, all मैं those आशा who are करता hearing हूँ, Bhagavad आप Katha, सुबोधी माता जैसे कथा नहीं सुनोगे, I just pray that you will बोला not वहीं hear का वहीं लिया, Katha like वहीं का that वहीं उल्टा रख grandmother दिया, ऐसे वाला who मत just करना। hear from one आप ear जब ये and throw कथा out खुद सुन everything रहे from हो, the second तो ear. सचमुच में क्या So करना, when you are अपने hearing समय का Bhagavad पूरा Katha, लाभ just उठाना use, और अच्छी तरह से just अपनी take हृदय में proper किसी चीज को लेकर के use of the जाना time और and उसी का जीवन में just पालन करना, accept the तब तुम्हारा teachings क्या and होगा, follow those teachings in भागवत the life. सुनना, Then कथा only सुनना your होगा। hearing इस Bhagavad प्रकार will की be योग्यता होनी successful. चाहिए This kind of श्रोता qualification should be श्रोता there में जो in सुनेगा the वो कैसे सुनेगा, hearer. ध्यान से कि मेरे मंगल की The बात कही जा hearer रही है, will मैं इसको listen करूंगा, मैं इसको पालन with करूंगा, so much मैं इसको attention that, गांठ oh, बांध it's लूंगा। about my इस प्रकार से अगर auspiciousness. करेगा I तब should होगा hear, उसका I should लाभ, follow नहीं this. तो उसका लाभ If नहीं not like होगा। this, then there is हरे no real कृष्ण। benefit. Hare Krishna. महाराज जी कह रहे हैं मैं 1 मिनट कथा सुनाऊं। टाइम भी बता दिया 1 मिनट से। अच्छा, हमारे गुरुजी मथुरा में एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते थे। एक बार एक महाराज जी Our Guruji used to speak very beautiful katha in Mathura. तो साधु की बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसे So बड़ी स्टाइलिश, one sadhu is speaking katha and his beard is very stylish, like coming straight down. जब वो कथा सुना रहे Now थे, when he is speaking katha, सारे श्रोता कथा सुन रहे थे। all the listeners were hearing katha. पीछे बैठी एक माता रो Now रही थी। one Mataji sitting behind, she started crying so much. आसपास जितने लोग बैठे, Now everyone around, they were thinking that, oh, she only heard katha properly. She is getting so emotional hearing katha. Everyone laughs, but very few people only cry. भगवान का नाम लेकर Chanting the holy name of the Lord, hearing Hari Katha, if one cries, then it's like a great fortune. सब देखने लगे। वाह, Everyone started saying that, oh, in real this Mataji only heard Katha. And the Sadhu Maharaj who was speaking Katha, सुनाते सुनाते वो भी देख रहे हैं। he also is observing while speaking that I am also speaking Katha. एक आंसू ना I don't have any tears in my eyes, but this Mataji, she is hearing from so much attention that she is crying. कथा समाप्त हुई, बोलो वृंदावन बिहारी। When the Katha got finished, जब कथा समाप्त हुई, सब उठ कर गए। everyone stood up. महाराज जी ने, वो साधु ने बूढ़ी माता को बुलाया। Maharaj ji called that old woman. माता, Hey Mata, come here, come मैंने here. सुनाई 3-4 घंटा। I spoke Katha for 3-4 hours. मैं भी बहुत कथा सुनता हूँ। I also hear Katha, read and speak. मेरी आंख I में never got tears in my eyes. What you heard that you were so much in tears? What was your mood inside that you were continuously crying? बूढ़ी माता कहने लगी, माता, That old woman started saying, oh Maharaj, what should I say? Oh, just tell me the truth. Oh Maharaj, what can I say? Just tell me. महाराज जी, Maharaj ji, कथा सुन के रोना नहीं आ रहा था। I was not crying by hearing Hari Katha. मैंने ना अपने घर में एक बकरा रखा हुआ था। Actually, I had a chicken in my house, वो बकरे की बड़ी सुंदर एक दाढ़ी थी। and the chicken had a very beautiful beard. बकरा And that मेरे घर से खुलकर पता नहीं कहाँ चला chicken, he just left my house. He ran away. And since then, I am searching for that chicken. But when I see you, when I see you, जब जब मैं आपको देखती हूँ, आपकी बड़ी सुंदर whenever I see your beautiful beard, I just remember my lost chicken. मेरे को इतना रोना आता And I cry so much. है। महाराज कहते हैं, अच्छा, Maharaj said, oh, कथा के कारण रोना। you were crying because of that chicken, not because of Katha. Why he said this? हंसी की बात है। This is something very like लेकिन कभी-कभी कथा in a में joke होता है। way, but sometimes we observe this in Katha also. Some mata, some brother, some old man, राम जी की कथा सुनते हैं और साथ they hear Ramji's Katha and start crying at once. दशरथ जी ने Dashrath ji राम जी के विरह में called the name of Ram in separation. Ram, Ram. तीसरा नाम कहा, Could not say third Ram. He just left the body.
जब ये कथा सुनते हैं ना, when they hear this katha, उनकी आंखों से झरझर आंसू। these personalities, they just get, अब वो जो आंसू they आ starts रहे हैं, crying. जो रोना है, वो राम जी के लिए नहीं आ रहा। Now, these tears are not because of Ramji. किस Our लिए रोना Gurudev है? is saying. Why they are उसको crying? याद आ रहा था, मेरा भी बेटा They are crying thinking that, oh, I also had a son. कनाडा चला गया। That son left me and went to Canada. He stays with the daughter-in-law there. So many times I told, oh, Diwali is coming, please come. He never comes. So many festivals came, he never comes. So like this, Ram, the way Ram left the father, my son also left me. So the person is crying for one's own son, not for Ramji. Yesterday also I was saying this thing. Dhruv did not enter into the forest for Bhagwan. He actually went into the forest to attain the high platform. That's why coming to here because of Bhagwan is different. So it all depends on our mood. What we say and what you hear. What are our moods? Understanding. Someone comes in the temple thinking, oh, let's go and see. Wow, very nice chandeliers. What nice design. Let's go and see. Some comes to the temple for this. Some comes to the temple to see what entertainment is happening there. Some comes thinking that, oh, let's go 5 to 8 is katha. We will go to 7:30. We will sit half an hour. Then we will have bhandara and we'll come back. So they come for nice prasadam. I'm telling you, I have spoken more than 150 Bhagavad. I know it. Some come with this mood that, oh, let me see where everyone are putting their slippers. Now, what should I say further? Everyone understood. Let me just steal some nice slippers. And some Matajis, they come to see that. See, I'm not saying of this place. I'm talking about Greater Kailash. And one in Hauskas. I really experienced this. I asked 2-3 Matajis, they gave an answer. Why you come to Hari Katha? What's your purpose? You like the Katha so much that you come every day? No. We actually come to check what color suit other ladies are wearing, what kind of bag they like, purse they are having, which company purse they are having. We are actually coming to see the fashion and the trend these days. That's why they come. But there are 2-4 people, Guruji used to say, 2-4 personalities who actually come to hear Katha. वो जो 10, 15, 20 जो कथा सुनने आते हैं, उनमें भी फिर 2-4 ऐसे होते हैं जो सच में कथा सुनकर उसको यहाँ बसाकर ले जाते हैं. And among them also there are very few who hear and accept and let that katha enter into the heart. This is not just like a dharmic activity, it's like a pious activity. No. ये धार्मिक क्रिया नहीं है, ये भक्ति क्रिया है. पुण्य का तो नाश हो जाएगा. Piety can get destroyed. कैसे नाश होता है? How it get destroyed? खर्च कर लिया, समाप्त हो गया. You earn piety and then you enjoy on the basis of that piety. For example, if I do a pious act of feeding some poor people, so what's the result of that pious act? I'll get some good results of that. So that result is like using that piety. So that piety gets finished. But bhakti never gets destroyed. Kauntaya pratijani name bhakta pranashyati. Bhakti never gets destroyed. That's why you all have not come here to earn piety. You have come here to earn bhakti.
पुण्य कमाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। One attains heaven by pious activity, by piety, and by bhakti one attains क्या अंतर Vaikuntha. है जी, हमें क्या पता? What is the difference? I don't know the difference. I just have to go to Swarga, heaven. सुथरा बड़े मौज मस्ती बाहर है। कितने दिन वहां रखा जाएगा? जितने दिन आपकी जेब में पैसा रहेगा। कौन सा पैसा रहेगा? पुण्य का पैसा। You will be kept in heaven only as long as you have piety to spend. धक्का मार के As soon as the piety gets finished, then you will be pushed away and thrown in the same world, लाख रुपए लेकर in this earthly planet, to earn more piety. रहे, खाना पीना For example, you earned nicely some, लंदन ब्रिज घूमने गए, सब कुछ देख you went to London and you nicely stayed there, 20-25 having sightseeing and all those things. जो जेब में पैसे थे 5 लाख रुपए समाप्त। Now, whatever money you had, like 5 million rupees होटल वाले कहेंगे or जी हल्का 500,000 रुपया, अब rupees, it all got finished. पैसा खत्म हो गया। Now, the hotel staff will say that, oh, रखेगा उठा होगा? you have to pay the bill for the next days. He said, no, my money is finished. Can I stay for some days? He'll say, no. They can give you some few hours, but they will throw you out. अरे पैसा दिया, But we'll say, oh no, we stayed for 1 month. Let us stay. If you force like this, then guards will come and throw you out with your luggage. And this is what happens in the heaven also. We earn piety, और जहाँ पुण्य and as soon as the pieties get finished, you again get thrown into this place. In Vaikuntha, such things does not happen. Yad gatva na nivarta. वैकुंठ में जाने से कोई धक्का नहीं मारता। In Vaikuntha, there is no such pushing. में जाने से अंदर Instead, धक्का मारा जाता है कि अब जाओ अंदर। और जो एक बार अंदर गया वैकुंठ में, in Vaikuntha, कभी फिर बाहर नहीं आता इस संसार में। you get pushed inside, not outside. That go to Vaikuntha. And once one reaches Vaikuntha, then there is no suffering, no distress, no coming back to this material world. सम्मान होता है, सारे Always gets respect. ये है भक्ति कमाने का लाभ। तो पुण्य कमाना है कि भक्ति कमानी है? What you want to earn? Piety or इसी बात bhakti? को अपने साथ Bhakti. के साथ ले जाओ। So just keep this point in your mind and take this with yourself. डालते हैं भागवत जी का प्रसाद, This is the prasad of Bhagavad Ji. कान का प्रसाद। We eat prasad. We also, the Harikatha that we hear is a prasad. So accept this prasad. होती है जो हमारे जीवन को, विचार को बदल करके रख देती है। बड़े बड़े संत ऐसे हुए, There have been great saints साधारण रूप में कुछ नहीं पता था, who don't know anything ordinarily. They just came to hear Katha. And they heard such beautiful Katha that their life got transformed. They got to know the reality. It's not that they left their house, but at least they got to know that what I was doing was right or wrong. सुंदर बात बताइए, Prabhuji said a very beautiful point. Whom we should hear Bhagavat, who does not have any kind of material gain, desire of material gain. Oh, you will give 10,000 rupees. I'll speak nicely. If you don't give anything, I'll not speak anything. सच में जो साधु होता है उसको कथा The one who is real sadhu, he has the greed to speak Katha. 5-6 घंटा लोग बैठ जाए और मैं सुनता He wants that people should sit for 5-6 hours and I'll just keep on speaking. नहीं, बल्कि पैसे 10 रुपए ले जाओ, लेकिन बैठकर कथा सुन लो। You can take some money from me, but 2-2 sit and घंटा hear. बैठ जाओ, 100 रुपए ले जाओ। You can take 100 rupees, sit for 2 more hours, but please hear Harikatha. That's what his moods are. It was 2008 in Govardhan in the month of Kartik. हम लोग वहीं पर थे। We were all there. पास में पंडाल में बहुत बड़े In Pandal nearby, कथा करते हैं। there was this personality who speaks so many Bhagavad Katha. He was speaking and thousands of people were there to listen. कोई डरे नहीं। कथा सुना रहे हैं, So he's speaking Katha. टीवी में आता है, हजारों लोग सुन रहे हैं। In television it comes, thousands of people are listening, and while speaking Katha, what he's saying, मुकुट धारण कर रखा है। he's saying that Parikshit ji was wearing golden crown. परीक्षित जी ने कहा था सोने में Oh, का वास and होता है। Parikshit ji only said that in the gold there is the residence of Kali. धारण कर
So because he was accepting golden crown, that's why Parikshit did a great offense. ऋषि के चरणों में He तो उसको फल भोगना पड़ा। offended a rishi, a saint, and he got the result इतना बड़ा कथा of this curse. He got the curse as a result. ऐसे ऐसे Now this speaker, who is very famous in the whole area, he is speaking like this. विद्वान है संस्कृत के, इतनी साधारण से And बातें समझ it seems that he is very great speaker, very great knowledgeable scholar, but he does not understand one small point. That's why what he said. में कली का वास है। He said that gold is residing in the Kali is residing in the gold. सोना दान करने Gold is not something to wear, but to पर रखकर दान donate. करना चाहिए। Bhagavad ji सोना पहनना नहीं चाहिए, should be सोना दान करना चाहिए। kept on a golden throne and should be donated. So when he is speaking like this, so the speaker, the listeners, they saw that Maharaj ji himself is wearing 4 golden rings. And he is saying that you should all donate gold, you should not wear gold. कह रहे थे, इन्होंने भी देख लिया, So ये देख रहे, he also observed that, oh, listeners are observing my fingers. को घुमाने वाले, So now he just twisted the words. देखो देखो, He said, wait, see, ध्यान से सुनो, listen carefully. सोने का दान करना चाहिए, पहनना नहीं चाहिए, ऐसा भी है। Gold should be donated, not should be worn. श्रोताओं के लिए क्या? This has been spoken for the listeners, not for the speaker. The speaker can wear gold, but the listeners cannot. So such is the way they twist their words. इसलिए ऐसे भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं। और That's why there is no point of hearing Bhagavad from such personalities. दूध के प्याले में सर्प मुंह लगा दे तो वो विष हो जाता है, वो दूध नहीं रह जाता। If the milk gets touched by the lips of the snake, then that milk becomes poisonous. It's not nourishing. जब कोई See, Bhagavad Katha is pure and very nourishing, but if प्रोफेशनल है, a professional speaker speaks, the one who accepts money and then speaks Bhagavad, the one who has made livelihood out of Bhagavad, that kind of Bhagavad acts like a poison. It takes us towards poison. It takes us towards material entanglements more. Jao Bhagavad Pado Vaishnav Sthana. You should go and hear Bhagavad from Vaishnavas who wants to make Bhagavad their life. And in real, Guru Vargas have actually understood Bhagavad. माधव जी का सुंदर दर्शन, So that's why it is our great fortune that we are having darshan of Radha Madhav Ji Mahaprabhu भागवत जी के and सब श्रवण कर रहे हैं। all the instructions of Guru Varga's teachings we are hearing. We all are very, very, very fortunate. मैं आप सबको प्रणाम करता I pay obeisances to you, everyone, to you all. Hare Krishna. हूँ कि Jai. अब कल कथा का चौथा Now दिन, tomorrow is the 4th day of Katha. और कल है कृष्ण जन्म। Tomorrow is Krishna birth pastime. So I already said that एक साबुन खरीदो 3 फ्री। we have scheme. ऐसे कल अगर आप अपने If you bring your friends tomorrow, all your neighborhoods and everyone, 50% भक्ति का भाग आपको then their arrival, तो अपना तो रहेगा ही, उनका you will get 50% more auspiciousness. जगह की चिंता नहीं, हमें बहुत Don't worry about the space. There are still so many corners free. स्पीकर के ऊपर बैठ जाओ, I told yesterday people can sit over the speakers and लाएंगे तो everywhere. कौन So तो नहीं ला रहा। you will bring everyone? Who is not bringing? These are the people who are not bringing. Who are bringing? More people? Hare Krishna.